Hello, good morning everyone. Hope you all are well. So let's discuss the another session. Sorry today I'll not send any video. Sorry, yesterday I'll not send any video for that because of some busyness. Now we move on to the next illustration. Lesson 7. I hope your illustration 2 you done by yourself. That's why I'll move on to lesson 13. Okay. On I read out that illustration. Listen carefully. On 30th June 2016, the bank column of Anil cash book showed a balance of rupees 8250. Now, which book we have? The bank column of cash book showed a balance. That means we have a book cash book because the balance is given of cash book. Understood? So cash book. It's clear to you. Now the first one. Out of total checks, so first of all we are done. Look at your what you call the solution. Bank reconciliation statement as on 30th June 2000 as on 30th June 2016. You must write okay, at the top. Now make a what you call the format particular plus and minus. On the top what you write on balance, it is written as balance cash balance. To the cash balance cash, so our balance is that is a debit balance, so you add on debit balance as per cash book. Yeah, you write on bank balance, sorry, cash book balance, yeah, balance as per cash book, and the bracket you write on debit. Your wish, you start from the beginning or you at the ending at the bracket you write on debit. So because it is show now you have a confusion that there is nothing written debit. So the positive balance all called the cash book positive balance is called debit, passbook positive balance is called credit. Understood? If nothing is written, it is only written as cash balance, cash book have a balance, so that's mean a debit balance. Okay, positive balance. For credit balance they clearly indicate in the question. Now move on to the first transaction. Out of the total checks or amount rupees 8000, listen carefully, that's the important one. Out of the total check और रुपीज़ हाउ मच 8000 issued, ठीक हो गया. चेक अमाउंट टू रुपीज़ 5800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th June 2016. Listen carefully. Check issued 8000. How much check were presented for payment? For 5800. The left one is how much? 2200. How much? 2200. So what to do for देखो listen, 5800 have been presented for payment. That's been correct. ठीक है, क्योंकि you issue 8000 check and 5800 check will be क्या हो cleared, मतलब that will be presented for payment. मतलब understood up to date of 30th June. क्योंकि what we have to think while we doing what you call the bank reconciliation statement, we have to think about the date. Everything which is after 30th June, that means that is not recorded in the books. But what is adjusted in the book up to 30th June, that means that's correct. So what is written here means they issued check of rupees 8000, out of which 5800 have been presented for payment. Means check issued is 8500 already, matlab they get the they paid the the bank debited their account with rupees 5800 because it is that amount will be presented for payment. The left one 2200, so the transaction is check issued but not presented for payment. Check issued but not presented for payment is how much? 2200. Understood? So whenever we check issued check, so what we do, we deduct our cash book. So cash book is deducted from 8000. Understood? Passbook is deducted from 5800 only. तो कैश बुक कितने से ज़्यादा घटी है? फॉर 2200. तो नाउ वी व्हाट वी डू, वी एडिड दैट वन. तो लुक एट द सॉल्यूशन. व्हाट इज रिटन देयर? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दैट इज 2200. Understood? I hope you understood that well. Next one, it is important one. Next one is how? What is it? Out of total check of rupees amount to rupees 6000 sent to bank for collection, means we receive a check and that when we receive a check, that we check we send to the bank for collection. When we receive the check, we the cash book is already include. Cash book कितने से increase हुई है? 6000 से increase हुई है. Understood? Now the bank increase 6000 when they clear the check. Now check of rupees 4800 were created in passbook up to 30th June to them. मतलब only 4100 will be created in the bank column. So the left one how much? That is 1900. How much? 1900 left. So check sent to bank but not collected by bank, that is only 1900. Understood? तो कैश बुक 6000 से कटी थी, पासबुक इज डिडक्टेड फ्रॉम 4100, दैट्स ओके. बट 1900 से नहीं डिडक्ट थी, तो हम कैश बुक को 1900 से क्या कर देंगे बेटा? व्हाट वी डू, मतलब बड़ी थी सॉरी, व्हाट वी डू, वी डिडक्ट दैट फ्रॉम चेक बुक. ठीक है, कैश बुक से हम डिडक्ट कर देंगे. तो लुक एट योर सोल्यूशन. लेस में देखिए, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रिएटेड बाय द बैंक, that is how much? 1900. So that is will be shown in minus column. I hope you understood, and that is important. ये समझ लिया तो that's okay, because we have to take the date on only up to 30th.
anything which is clear up to 30th June या paid up to 30th June, that's okay. But after 30th June, that's mean that is not clear, because we make the statement on 30th June after anything. So sir, you have a confusion why it is given after, if we prepare up to 30th June, but if we are not prepared on 30th June, we are prepared for the next month on 5th of the July, on 6th of the July, then they will come to know that that check will present on 1st July, 2nd July, that's like. तो बट वी हैव टू प्रिपेयर ओनली अप टू 30th जून, ठीक है। तो 30th जून तक जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं यू हैव टू टेक ओनली दैट मच, ठीक है। आफ्टर 30th जून दैट इज मतलब दैट इज नॉट हैपन इन कैश बुक और पासबुक। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, थर्ड वन। ऑन 30th जून अ कस्टमर डिपॉजिट रुपीज 3500 डायरेक्ट इन द बैंक कॉलम, बट इट वॉज नॉट इंटर्ड ओनली, बट इट वॉज इंटर्ड इन पासबुक ओनली। देखिए अब इसमें भी क्या है, सेम कैश बुक नो एंट्री, कुछ हुआ ही नहीं है। पासबुक में एंट्री हो चुकी है, हाउ मच, 3500 से ऐड किया गया, बिकॉज डिपॉजिट बाय कस्टमर दैट्स आर इनकम। तो व्हाट वी डू, अब वी हैव अ कैश बुक, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे। तो लुक एट योर सोल्यूशन, 3500 इज ऑलरेडी डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक 3500। नेक्स्ट वन, डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक, लुक हियर, डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक बैंक कॉलम, यानी कैश बुक का डेबिट साइड है, दैट्स मीन प्लस फिगर, हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹100, मीन्स दैट विल बी इंक्रीज बाय 100, मीन जो कैश बुक है, ठीक है, इट इज रिटन एज डेबिट, तो डेबिट ऑफ कैश बुक इज प्लस, ठीक है। तो जो है वो 100 से ज़्यादा प्लस की गई है, 100 से बढ़ाई गई है, ओवरकास्ट में बढ़ाई गई है, डेबिट साइड है, तो डेबिट ऑफ कैश बुक दैट इज मीन प्लस फिगर, डेबिट ऑफ कैश बुक दैट इज मीन प्लस फिगर, देखा ही है ना आपने, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड रिसीव साइड, तो रिसीव साइड इज ओवरकास्ट, मीन्स दैट विल बी इंक्रीज बाय, ऑलरेडी इंक्रीजेज बाय 100 रुपीज। तो व्हाट वी डू, वी डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम कैश बुक, दैट्स क्लियर हो गया, तो दैट्स वाई डिडक्टेड 100 रुपीज। नेक्स्ट वी हैव नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800, what is that, no entry has been made in the cash book for the rent of 800 paid by banker according to Anil standing instruction, means bankers means passbook, तो पासबुक ऑलरेडी डिडक्ट फ्रॉम कितना, हाउ मच बेटा, 800 से डिडक्ट है पासबुक, तो व्हाट वी डू, कैश बुक को भी हम क्या कर देंगे, -800, वाई, अपोजिट बुक सेम इफेक्ट, सेम बुक अपोजिट इफेक्ट, अपोजिट है ना, पासबुक में एंट्री है कैश बुक में नहीं, तो कैश बुक में डिडक्ट कर देंगे। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, द पासबुक शो अ क्रेडिट और रुपीज, तो पासबुक मीन्स पासबुक शो अ क्रेडिट और रुपीज, पासबुक में हाउ मच क्रेडिट है, कितना बेटा, 320 का क्रेडिट है फॉर इंटरेस्ट, और पासबुक में डेबिट है कितने का बेटा, दैट इज हाउ मच, 40 फॉर बैंक चार्जेस। आई होप यू अंडरस्टूड दैट वन। तो क्रेडिट है तो इनकम है, 320 से बढ़ी है पासबुक, तो कैश भी बढ़ा देंगे, डेबिट 40 से आपकी डिडक्ट है पासबुक, तो व्हाट वी डू, वी डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम कैश बुक ऑल्सो, तो 320 एडेड, देखो लुक देयर सॉल्यूशन, 320 added and 40 deducted, because it is not recorded in the cash book, nothing is given, but लिखा है, but these are not be recorded in the cash book, means पासबुक में एंट्री हुई कैश बुक में नहीं, तो सेम, तो अपोजिट बुक सेम इफेक्ट, तो व्हाट वी डू इन पासबुक वी डू द सेम इन कैश बुक ऑल्सो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव ऑन टू द व्हाट इज द सॉल्यूशन। टोटल प्लस आइटम इज 14,270, माइनस आइटम इज 28,480, तो विच साइड इज ग्रेटर, दिस वन। तो वी स्टार्ट फ्रॉम डेबिट, तो वी what you call डेबिट से स्टार्ट किया था, डेबिट इज what you call the डेबिट साइड इज what is ग्रेटर, तो what we write on बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट साइड, ठीक है। वी स्टार्ट फ्रॉम डेबिट, तो वी राइट ऑन CR, बट द बुक विल बी चेंज, द बैलेंस वी राइट ऑन द बैलेंस एज पर पासबुक। नाउ दोनों बोथ इक्वल हो गई, हमने रेक्टिफाई कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड दैट वन, ठीक है बेटा। So do the questions whatever I send you. I think yesterday I'll send you the PDF of the questions, some illustration and with the practice. And please practice at your home. Then only you are able to solve the question. Thank you everyone. Have a good day.